speech competition में हिस्सा हुआ मुझे तो alright, so please give it up for Miss Alright. Representing my school, in this inter-school speech competition organized by Deepak Nabam Living Home and Apna. On this auspicious day, I am very honored to stand before you to deliver a speech on the topic Constitution and Contributions of Dr. B.R. Ambedkar. What exactly is Constitution? Constitution is like a rule book for a country which helps us to govern it properly, which helps the leaders to govern it properly. And the Constitution is like it's basically a written document of the rules and laws of a country. Why was it formed, how was it formed, and when was it formed? The Constitution was formed due to, where you all know that India was governed by the Britishers for a very long time, which is almost for 2 centuries. So, in the earlier 20th century, the Indian rebellion grew and people demanded freedom in order to govern themselves and rule themselves. So, in order to do that, they had to set a proper set of rules which we refer as Constitution. The Constitution was formed by the drafting committee, which consisted of 389 members but declined to 299 due to partition. The head of the drafting committee was none other than the head of the father of our Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. I am Rishika, a student of PM Shri KV number 1 Itanagar. In short, justice is another name of liberty, equality and fraternity. So when we talk about equality, the very first name comes in our mind is of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Because as a young boy, he was forced to sit outside his classroom, couldn't even touch the same part as his classmates, was refused in education in Sanskrit and had to face much more discrimination at every stage of his life. The only reason behind this was that he belonged to the so-called lower caste called Dalits. But instead all this, his goal to make every Dalit man realize their individual identity, his goal to make each and every woman cherish the prospect of freedom never faltered, and he answered his operations with his education. The person who was forced to walk out of his classroom with his slate and gunny bag later became the man who walked into the Parliament Hall holding the greatest document of Indian history, the Constitution of India, and is now known as the father of Indian Constitution due to his massive role as the chairman of the drafting committee for the Indian Constitution. My name is Tasogant, son of Tasotama Ampi, and I come from the Scholars Institute of Itanagar. Today, I stand before all of you to speak of our Indian Constitution and of the contributions that Dr. B.R. Ambedkar made. To begin, I would say that our Indian Constitution took 2 years, 11 months, and 18 days to be completed. And it has over 1 lakh words, making it the longest national constitution to ever be adopted. It was adopted in 1949, in the 26th November 1949, but
It came into effect on 26 January 1950, and it is due to this that we celebrate our Republic Day on 26th of January. Good morning everyone, my name is Raja Kamlo, I am from Gop Middle School in Bihar. As we all living in a freedom country with everything we got and every constitutional right that we had and living freely and happily. But it wasn't that great at the time that people were struggling. And at those times they accept their fate. But there was one person who was born in 16 April 1691 who was born to change the fate of India, whose name was Dr. Bhimrao Ambedkar. As Dr. Bhimrao Ambedkar was a young student, he used to get bullied very hard because he was from a lower caste. He doesn't want to just stop from bullying, stop being ableist. He wants to change all the country for people of those who need help. He was not just an ordinary people who think that he can change by doing just one thing. He wants to change the country with all his will. As we all know that Dr. Bhimrao Ambedkar was a smart person, we also know that he had done many things for his country. I'm honored to stand before you. Today is Deepak Nabam Living Home, and APLA organized a speech competition on the topic Indian Constitution and the contribution of Dr. B.R. Ambedkar. To talk about the document which has shaped the very fabric of our nation, the Constitution of India. As we gather here today, I would like to highlight one of the most significant aspects of our Constitution, the concept of equality. Our Constitution recognizes the individual equality rights to all the citizens, regardless of their caste, creed, gender, or social status. Article 14 of the Constitution states that the state shall not deny to any person's equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. This means that every citizen of India has equal rights to be treated equally and without any discrimination. Fantastic, wonderful, real life. Mirman ko dale mahane mule daya. Fantastic, wonderful, real life. Mirman ko dale mahane mule daya. Fantastic, wonderful, real life. Mirman ko dale mahane mule daya. Eklo जीवन को परम भूलेरा. Eklo जीवन को परम भूलेरा. आओ ना चुपाता ली झंझमी गुजरा. Aninayo, ashina jayo, dekaro na. Auzulanaya, aninayo, ashina jayo, dekaro na. Auzulanaya. Ambedkar and Constitutional Values. First, let me speak about the man who shaped modern India, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar. Dr. Ambedkar, a scholar, journalist, economist, activist, legal luminary, social reformer, and political leader, has contributed in many walks of life, and the most significant contribution in his role as the chairman of the drafting committee of the Constitution of India. Dr. Ambedkar was born in a community which had suffered oppression for many centuries and was treated as untouchable. And only he could bring the best framework of the Constitution for the future Republic of India. The Indian Constitution is the result of a constant struggle for rights in the post-World War period as well. After the India Independence Act, which came into force on 15th August 1947, the long period of British rule was finished. Constitution is the foundation of our democracy and is essential to understand its significance and the role played by Dr. Bhimrao Ambedkar shaping it.
The Indian Constitution is the longest written constitution with 448 articles and 12 schedules. It was adopted on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950. Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as the father of Indian Constitution, chaired the drafting committee and played a crucial role in drafting the Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar contributions are immense. He ensured that the Constitution guarantee the right against religious freedom, the abolitions of untouchability, and freedom against caste discrimination. He also ensured that he also promote education, empower women, and fight against caste discrimination. The Constitution of India is a living document that has amended several years to keep pace with changing times. Today, as we reflect on Dr. Bhimrao Ambedkar shaping the Constitution, we are reminded of his vision for a more just and equitable society. Good morning, all the chairmen, and my topic is the Indian Constitution and Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar is the father of Indian Constitution, and he was builder, and he was designed Reserve Bank of India. Thank you. My name is Mahi Singh and I am a student of PM Shri Kendra Vidyalaya number 1 Itanagar. As Dr. B.R. Ambedkar once said, educate, initiate, organize. These powerful words resonate even today as we reflect on his lifelong struggle for justice and equality. Today we remember and honor Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, the architect of our constitution and a visionary leader who dedicated his life to the cause of social justice, equality and human rights. His contributions continues to shape the values enshrined in the constitution, which remains relevant to this day. If I ask you, what does equality mean to you? For Dr. B.R. Ambedkar, it meant more than just a word. It was the foundation of his life's work and the core of the Indian Constitution. Myself, Deepak Nabam, representing Manipur of Java. The Constitution. It was actually made in November 26, 1949, but it came into force in January 26, 1915. So, the Constitution, it gives us an idea of how to live. So, I would like to begin. As I stand here today, I am reminded of the words of our very own President, Srimati Draupadi Murmu. While she was addressing a convocation, she said, डॉक्टर अम्बेडकर वो तो मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ. She said, he said more to me because he did something, which is the reason that I'm standing today in front of you all, in the position where I am today. My name is Ankita Singh. I am a student of PM Shri Kendra Vidyalaya number 1 Itanagar. Today, it is an honor for me to stand before you and talk about Dr. Babasaheb Ambedkar and constitutional values, a man whose vision and perseverance shaped the democratic fabric of India. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution. Singha, student of PM Shri KV number 1 Itanagar. It's an honor to stand before you today to speak about Dr. Bhimrao Ambedkar and the constitutional values that guide our nation. Dr. Ambedkar was the principal architect of the Indian Constitution, was not just a great leader but a visionary who dedicated his life towards justice, equality and social reform. Born on April 14, 1891, Dr. Ambedkar faced discrimination
This is Mumya Parve representing Donipolo Vidya Bhavan, is standing over here to talk about a document that has changed our nation, the Constitution of India. Our Constitution is not just a set of rules and regulations, it's a reflection of our nation's rich history, struggle for independence, and aspiration for a better future. Our Constitution is the longest written constitution in the world, reflecting our country's diversity and values. It guarantees fundamental rights like freedom of speech, equality, and right to education, empowering every citizen to live with their dignity. It also outlines our responsibilities as citizens through fundamental duties, reminding us the importance of unity, respect, and management. My name is Megham Pandya, and I am representing the School Scholars Institute. Dr. B.R. Ambedkar. His full name is Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, and he is popularly known as Baba Sahib. He was the first Law Minister of India after independence. He was the main architect of Indian Constitution and often called as the father of the Indian Constitution. Bhimrao Ambedkar had championed some of the constitutional values like social justice, equality, and protection of fundamental rights. I, Anudada, from Tinka Public School, standing in front of this prestigious stage to deliver a speech on the topic of contribution of Dr. B.R. Ambedkar and our constitutional values. As we all know that Dr. B.R. Ambedkar has put an outstanding contribution by drafting the Indian Constitution. He has become the champion of human rights. Dr. B.R. Ambedkar was first appointed as India's first Law Minister in Nehru's Code. He is also considered as the father of Indian Constitution. My dear friends, whenever people talk about Dr. B.R. Ambedkar, they always limit him to the leader of downtown people. They always limit him to the leader of Dalits. Is that he was limited for only this word. Other introduction people have about him as he was the chief architect of Indian Constitution, which is very well the truth. But even after so many years, Dr. Bhimrao Ambedkar is not fully appreciated or understood by the general masses. Whenever people talk about him, they always refer to him as the Masiha or the chief architect of Indian Constitution. कि आप सभी लोग आए बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सो हमारा जो आज का प्रोग्राम था लेट मी टेल यू वंस अगेन कि ये बस अवेयरनेस फैलाना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताना एज वेल एज स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना वी आर रियली मच grateful to see a 11-year kid coming to the stage with full of confidence even though he couldn't make it but still उनके confidence के लिए हम लोग दाद देना चाहेंगे and हमारा प्रोग्राम यही मैसेज देना चाहता था यही लोगों को मोटिवेट करना चाहता था कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता था एंड वी आर रियली मच एक्सपेक्टिंग कि वो काफ़ी हद तक फुलफिल हुआ देयर वर सम हाइज एंड लोस बट कोई बात नहीं जैसे भी हुआ हमारा प्रोग्राम काफ़ी स्मूथली चला अप्स एंड डाउन के बाद भी एंड फाइनली वी आर कमिंग टू एंड फाइनली अभी आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इसी के साथ वंस अगेन वी आर थैंकफुल एंड अभी हम अपने विनर का जो नाम है वो अनाउंस करने वाले हैं सो यस थैंक यू वेरी मच लadies and gentlemen. I think Mr. Adil Special Advisor to Mr. Dr. Tajuji, ABA Ekam NH. और ये सम्मानित कर रहे हैं हमारे राज्य के गवर्नर ऑफ इंडिया बहुत नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस राके आगम दुई के साथ और आज हम डीके हॉल में कर रहे हैं जहां आज दीपक नाबम लिविंग होम के द्वारा से एक इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन रखवाया गया है और जिसमें लगभग बहुत सारे बच्चे लोगों ने भाग लिया है और टॉप 15 से 16 लोग ने आज भाग लिया है जिसमें विनर्स भी मिला गया है और जिसको इनिशिएट लिया गया है मिस्टर कारका योमचा जो कि बहुत यंग टैलेंटेड एक लड़के हैं जो आप सभी जानते होंगे। हालांकि जो इस तरह का जो इंटर स्पीच कंपटीशन हुआ जाता था आजकल आप अगर विटनेस कर रहे हैं तो बहुत कम देखने को मिलता है, अगर होते हुए तो केवल स्कूल के अंडर में ही होता है और जो एक दौर था कुछ वक्त सालों पहले या बहुत साल पहले
हमारे अरुणाचल में इस तरह का जो स्पीच कंपटीशन अलग अलग सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स में रखा जाता था, वो कुछ दौर कम हो गया या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। तो जिसका एक नया कॉन्सेप्ट जो रिवाइव करवाने के लिए मिस्टर कारका योमचा के द्वारा से ये पहला शुरुआत किया गया है, और उन्होंने अपनी तरफ से अपील रखा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे इतने सारे स्कूल्स के गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट से जितने भी स्कूल्स बच्चे होते हैं वो आगे आए और भाग ले इस तरह के कंपटीशन में। और आइए चलिए मिलाते हैं इन सभी विनर्स से और दिखाते हैं इस इवेंट्स को। आइए। मिस यान्यो दादा फ्रॉम किंग पब्लिक स्कूल। Aditya Thakur from PMC KV number 1 Itanagar. I'm Rishika Kumari from PMC KV number 1. First of all, I'm so thankful to Mr. Karka Yomcha. Actually, मेरा registration बहुत लेट हो गया था and he considered it. I'm so happy. और उसके बाद like इतना मेहनत करने के बाद जीते तो I'm so happy and it was a wonderful experience. जीत के तो अच्छा हमेशा लगता है, लेकिन एम तो हमेशा फर्स्ट के लिए किया था। कुछ कुछ जो गलती हो गई बीच में उसकी वजह से शायद ये मिल गया, नहीं तो फर्स्ट के लिए एम करता। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कहीं स्पीच देने का, तो एक्सपेक्ट तो नहीं किया था जीतूंगी, लेकिन पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा और जीत के तो बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली ऐसा कंपटीशन और होता है वो उनसे आगे जाएगा, और बहुत अच्छा है कि ऐसा कंपटीशन रख रहा है अपना स्टेट का यूथ लोग को। हम लोग वो इंस्पायर कर सक रहे हैं इसका थ्रू से, और सबको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। इतना ही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग का स्कूल में वीकली हाउस वाइज कॉम्पिटिशन होता है, हाउस वाइज स्पीच कॉम्पिटिशन, बहुत सारा कंपटीशन होता है, हाउस कंपटीशन, जीके कंपटीशन, एंटरटेनमेंट होता है। एंड उसके बाद में और कंपटीशन याद नहीं आ रहा अभी तो। मेरा तरफ से हमको ऐसा लगता है कि हम लोग को अपना अरुणाचल के बारे में और ऐसा टॉपिक रखना चाहिए। लाइक इंडिया को तो हो ही गया, उसको तो हर कोई करता ही है, बट अपना अरुणाचल के बारे में, और ताकि सबको सबको अपना वो करने सकने के लिए अपना अरुणाचल के बारे में बता सकते, उसका बारे टॉपिक होने से लाइक मुझे लगता है कि ऐसा जो कंपटीशन है स्पीच वाला, ऐसा हर डिफरेंट सेक्शंस के लिए होना चाहिए ताकि सबका महत्व पता चल सके सभी को। तो सर, जैसे कि आपने आज विटनेस किया, बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन में भाग लिया है, तो उन सभी को विटनेस कर ऐसे गेस्ट यहाँ आप एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा है। तो वो जितना भी यहाँ बच्चा लोग आया उन लोग को मैं मेरा साइड से एक सिंपल सा एक मैसेज दे देगा। लाइफ इज नॉट ए कंपटीशन विद अदर्स बट इज ए जर्नी टू बिकम ए बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द थिंग्स। इसके साथ साथ जैसे कि इस तरह का जो स्पीच कंपटीशन होता है वो पहले ज़माने में बहुत होता था, मगर कुछ पीढ़ी में कुछ आप कह सकते हैं कि अभी के जनरेशन में ये गायब होता जा रहा है, केवल इन स्कूल्स के अंडर में होता है। तो अभी आई थिंक बहुत गैप के बाद आज ये ऐसा इंटर स्कूल कंपटीशन करवाया गया है। तो इस तरह का जो कंपटीशन है फॉर द स्कूल्स यूथ स्टूडेंट्स अगर रखा जाए तो आपकी तरफ से कुछ सजेशन या मेरा साइड से तो सजेशन वही है इस टाइप का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलना ही भूल गया, करका भाई thank you so much for inviting me as a special guest of today program. On the other hand, जितना भी यहाँ मीडिया लोग आया हुआ है उन लोग को भी थैंक यू सो मच। और मेरा साइड से तो सजेशन ये है कि हमेशा हर ईयर में 1 ईयर में रखने से ठीक है। तो हमारा साइड से जो मदद जो स्टेट गवर्नमेंट का साइड से जो देना है वो हम लोग के बैक में हम लोग साथ देगा। इसके साथ साथ नॉट ओनली इन कैपिटल, अगर इस तरह के स्पीच अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जितने स्कूल्स है अगर इनका रखा जाए या डीसी के द्वारा या वहाँ के जो हेड मास्टर्स है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो एक ट्रेंडिंग पहले चलते थे आजकल गायब होता जा रहा है, तो आपकी तरफ से कैसा मैसेज रहेगा कि क्या करना चाहिए? मेरा ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो से भी आपका मीडिया का माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसा वीकली या तो मंथली एक तो अपना स्कूल में भी इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन रखने से ठीक रहेगा। तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग साथ देने से ठीक है और पब्लिक एज वेल एज। Okay, ma'am. So, as a today, you have witnessed the speech competition as a team judges. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, और इतने सारे बच्चे अलग अलग स्कूल से आए हैं, तो आपकी तरफ से कैसी एक्सपीरियंस? मेरी तरफ से तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, and the students were very students means the participants were very good, and especially I like to mention the kid who came here. He was around 11 years of age, and he was very good. Okay, he came for just 5 minutes and all, but I appreciate the parents as well, the school as well, कि उन्होंने सोचा कि वो 11 साल का बच्चा भी आ सकता है, और ये एक तरह का encouragement है
जितने दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे स्कूल्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए तो बहुत अच्छा लगेगा इस तरह का प्रोग्राम का। क्योंकि हमको लगता है कि अगर वहाँ पे कोई बोल भी नहीं पाते तो हमको लगता है कि वो क्या करने, मजाक के तौर पे ले लेते हैं हम। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड देयर एंड speak even one sentence. It's very it needs a courage. So इस तरह से and I hope कि इस तरह का जो प्रोग्राम है और ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स का पार्टिसिपेशन हो, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आएँ, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट इवन मी आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, सो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ये सोचते हैं कि वी कैन नॉट डू दिस, ये हमसे नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी आ सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका पब्लिसिटी होता तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बच्चे आते हैं। शायद हुआ होगा, मेरे जानकारी में है नहीं, तो इसीलिए मैं इस पे नहीं बोल सकती हूँ। मैम, इसके साथ जो सब्जेक्ट चुना गया है, टॉपिक, आजकल बहुत सारे टॉपिक होता है, तो इसके ऊपर भी आप कुछ सजेशंस, फीडबैक देना चाहेंगे ताकि लोगों बच्चे लोगों को और ज़्यादा नॉलेज या पढ़ने का इसको काम करें? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, क्योंकि जैसे हमको घर चलाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज़रूरत होता है, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडिया को हम अपना घर सोचें, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हमारा गाइडलाइंस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मतलब दूसरे के साथ कैसा आप संबंध बना सकते हैं, कैसे आप ज़िंदगी जिया जा सकता है, तो उस तरह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और मैं व्हाट आई फील इज़ कि जैसे आजकल आजकल जो हम लोग ज़्यादा बात करते हैं उस पे, लेकिन बात ही करते हैं, एक्चुअल में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अगर उस पे भी अगर इस तरह का प्रोग्राम्स किया जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम देखते हैं बच्चों को कि वो मेंटली कितना डिस्टर्ब रहते हैं, या फिर हाल फिलहाल में ही हमने एक अपना स्टूडेंट खोया है, वो टुक हिज ओन लाइफ। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ इशू में आप और काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स से भी, पेरेंट्स इस तरह के प्रोग्राम को पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है इस तरह के प्रोग्राम के। थैंक यू सो मच। So thank you to the Eastern Journal and Arunachal Express definitely. So मेरा मोटिव था इस प्रोग्राम को कराना कि हम लोग काफ़ी समय से हमने, आई थिंक इट्स बिन अ डिकेड दैट आई हैवंट सीन एनी स्पीच, इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन। विद इन स्कूल होता है लेकिन विद इन द स्टेट इंटर स्कूल नहीं होता है, तो उसी को रिवाइव करने के लिए कल्चर को आई हैव ट्राइड दिस। काफ़ी डिफिकल्टीज आई मेरे लिए एंड काफ़ी फंड्स का भी इशू रहा बट समहाउ आई डिड इट। एनजीओ, एक्चुअली हम लोग को काम करने के एनजीओ का ज़रूरत था एंड आई हैव बिन वर्किंग विद दीपक नवम सर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उनका एनजीओ में, लिविंग होम में और भी कुछ अलग काम में। तो मैंने कहा कि अच्छी, आई विल यूज़ योर एनजीओज नेम, उसके नाम से करते हैं और अच्छा प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम। सो दीपक सर हैज़ हैप्पीली एक्सेप्टेड माई ऑफर एंड दैट्स हाउ वी डिड इट। यस, तो हमने अपने एंड से फुल पुश किया, जितने भी ईटानगर में स्कूल्स थे, इनफैक्ट इन नाहरलगुन आईसीआर रीजन में वी वेंट टू अराउंड 36 स्कूल, सबको इनविटेशन दिया बट ओनली फ्यू टर्न आउट टू कम हियर। काफ़ी मुश्किल से हमें 20 कंटेस्टेंट्स मिले, उसमें से भी कुछ ऊपर नीचे होकर शॉर्टलिस्ट करके हमने 16 कंटेस्टेंट्स को आज रखा। वन वॉज एबसेंट, सो वी हैड टॉप 15 हियर एंड सो रिवॉर्ड हमने थोड़ा ज़्यादा रखने का कोशिश किया था, लाइक लेट्स से एटलीस्ट ₹1,00,000 फॉर द विनर, बट वी कुडंट मेक इट। सो काफ़ी फंड्स का इशू हो गया, एज आई सेड बिफोर कि नोबडी इज फंडिंग दिस इवेंट। सो हमने विनर का जो प्राइस रखा था दैट वाज 30,000, सेकंड जो विनर था उनका 20,000 एंड रेस्पेक्टिवली थर्ड का 10,000। सो वन ऑफ द स्टूडेंट, द विनर सजेस्टेड कि हमें, आई थिंक शी वाज एक्चुअली राइट, कि हमें आई थिंक अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो करना चाहिए, ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम, स्पीच कंपटीशन करना चाहिए। बिकॉज इवन इफ आई आस्क राइट नाउ ऑडियंस में से कि नेशनल एनिमल क्या है, सब लोग मिथुन कहेंगे, वेयरएज इज एक्चुअली हॉलॉक गिबन। तो आई थिंक हमें अरुणाचल के बारे में भी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम, क्विज कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन जो अपने कैपेबिलिटीज़ में पॉसिबल होगा वो कराना चाहिए इन फ्यूचर डेज। यस, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय बिग ब्रदर, माय बिग बॉस माइकल, माइकल ताजो, ही इज़ द पीएलओ टू स्पीकर सर। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से हेल्प किया और बाकी हमने मिल बांट के कुछ अरेंज किया। ऐसा मैं किसी से बहुत फाइनेंशियल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी स्पेशल गेस्ट, किसी से फाइनेंशियल एड की मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी कैपेबिलिटी में जितना होगा आई विल डू माय बेस्ट। यस, टू ऑल द विनर्स कांग्रेचुलेशन फॉर व्हाटएवर यू आर द बेस्ट वी कुड एवर फाइंड। एंड टू द यूथ, आप लोग भी प्रोग्राम में आइए। एक बहुत दुख बात क्या लगा कि हमने पूरा प्रोग्राम अरेंज किया, वी डिड एवरीथिंग, रिफ्रेशमेंट, स्टेज शोज, डांस प्रोग्राम,
उसके बाद भी ना टर्न आउट बहुत कम था। आई वुड से कि लिटिल कम, सिर्फ 100 लोग आए थे इवेंट को देखने के लिए, एंड दैट टू पेरेंट्स वर इंक्लूडेड। सो आई वांट कि डीके जैसे हमने इतना बड़ा हॉल बुक किया है जिसका रेंट ही 70,000 रुपीज़ है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500-600 पीपल टू कम अप टू दिस इवेंट, बट लोग नहीं आए, उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बट विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम।